Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ikram Al-Haq and you're watching my YouTube channel English with Ikram. Dear student, today I am going to discuss some very important MCQs. These MCQs are very much important for ETA, NMDK, all teaching job tests, Army and FIA test. And these 18 MCQs are based on English grammar. And from English grammar, maximum MCQs will be from the concept of all parts of speech and tenses. जैसे मैं आपको अक्सर क्लासेस में बताता हूँ, ऑनलाइन मेरे जो यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ हैं उनमें आपको बताता हूँ कि आपका कोई भी टेस्ट है, इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर यू कैन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी MCQ. जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल एडजेक्टिव, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच एंड योर कॉन्सेप्ट अबाउट एडजेक्टिव इज़ क्लियर. अब MCQ जिस तरह मर्जी आए, यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट दैट. आप MCQs कर सकेंगे. It all depends on your concept. In today's video, I will discuss 18 very important MCQs and I will discuss the right option with logic. Concept already मेरे YouTube की videos में, you can watch those videos again and you can attempt these MCQs yourself. पहले मैं MCQ डिस्कस करूँगा, ऑप्शन आपके सामने होंगे. आप अपनी जो आपका बैकग्राउंड नॉलेज है उस पर आपने अपने खुद चेक करना है, फिर आप देखें कि आपका ऑप्शन राइट है कि रॉन्ग है. MCQ number 1, let's get started. Number 1, he came to greet me. The MCQ is he came to greet me and the underlined word is came. The underlined word is what kind of verb? Either it's transitive, intransitive, ambitransitive or regular verb. Now we have discussed there are two kinds of verbs, transitive and intransitive, and then I have discussed ambitransitive verb. Transitive verb आप अपना देख लें, if you are right it's okay, लेकिन I will explain each and every MCQ. Transitive verb is a verb that needs an object for the completion of meaning. ऐसा verb जिसको अपना meaning, अपना sense clear करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. Intransitive does not need any object for completion of sense. Ambitransitive, it can be both transitive and intransitive. It sometimes needs an object and sometimes it doesn't need any direct object. And regular verb is something else. So here the word is came. He came to greet me. In this particular sentence there is no object and the sense is clear. It simply means that the right option is intransitive. Because came, come, run, go, sleep, these are the verbs that don't need any object for completion of meaning, right? Number 2, if you have dash problem, you may inform the administration. If you have dash problem, the options are if you have some problem, if you have many problem, if you have any problem, if you have more problem. This is, I think, very simple. The right option is there will be indefinite pronoun any. The right option is, and if you have any problem, you can inform the administration. If you have any problem, if you have any information, if you have any query, it's something very simple. Number 3, all is not lost yet. The underlined word is all is not lost yet. The underlined word all, it is what kind of pronoun? Either it's demonstrative. We have discussed all the kinds of pronoun. आप मेरी pronoun की वीडियो देख सकते हैं. I have discussed pronoun in detail. Demonstrative pronoun, personal pronoun, reciprocal pronoun, indefinite pronoun. All. Is it demonstrative? You know, demonstrative pronouns are used to demonstrate, to point out towards some noun. This, that, these, those. Then personal pronoun, which are used as a subject, I, we, you, he, she, it, they. Then reciprocal pronoun, there are just two reciprocal pronouns which have certain mutual relationship, each other and one another. And the last one is indefinite pronoun. Indefinite pronoun don't point out towards any specific person. This is all, there is no specification. So the right option is this one, option D, indefinite pronoun.
All is not lost yet. The word all, it is indefinite pronoun. Number 4. In later days, he remained peaceful. The underlined word is later, and the underlined word is, the options are noun, pronoun, adjective and adverb. We have discussed all the parts of speech. Now look at here. In later days, the word later is modifying what? Days. Days, it's a noun. And you know that when a word modifies, when a word qualifies, when a word tells something more about the noun, it is adjective. Later days, early days, last days, final days. This is adjective. I think your concept about adjective is very much clear. Number 5. I dash him since long. It's about the tenses. I dash him since long. I knows him since long. I know him since long. I have known him since long. I will know him since long. I have discussed the concept of all the tenses. The logical concept. उर्दू के दवार से नहीं कि आखिर में याद है बहुत है. मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जस्ट रॉब्स आवर कॉन्सेप्ट. बड़ा गर्व कर लिया हमारा इस उर्दू के जो अल्फाज बताए जाते हैं. तो when an action started in the past, that is some connection with present, that is present perfect. It will be, I have known him since long. I have known him since long. The right option is option C. I have known him since long. Number next, ethics dash with morality. The options are deal, deals, dealt, none of these. This is subject-verb agreement. We have discussed there are different rules of subject-verb agreement. Just look at the word ethics. Apparently, it's a plural noun. No. S is the part of the word. ये S plural वाला नहीं है. Ethics, it's a singular noun. And when we have a singular noun in simple present tense, we use SIES with V1, which is fifth form of the verb. It is ethics deal with morality. Apparently you get confused looking at the word ethics. तो ethics का S जो है ये plural वाला S नहीं है. It's part of, जैसे Keats. अब Keats उसका नाम है. तो ethics, that's morality, अखलाकियात. It's one word, it's a noun. It will take singular noun. Right? Singular verb. Next, spot the error. This is another type of question. In your ETAN MDK test, you are given some sentences. There is one mistake in that particular sentence. You have to find out. You have to spot that particular error. तो जाहिर सी बात है वो एरर टेंसेस की भी हो सकती है, एरर यूज ऑफ आर्टिकल की हो सकती है, प्रेपोजिशन की हो सकती है, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की हो सकती है, कंडीशनल सेंट. तो आपको अपने माइंड में सारी ग्रामर दैट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी आपको रखनी है. उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट सेंटेंस MCQs की, तो आपकी वो सारी ग्रामर, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर रिवाइज होते रहेंगे. तो हियर द सेंटेंस इज ईच ऑफ दीज विमेन विशेज दैट दे हैड रेड द इंस्ट्रक्शंस. अंडरलाइंड वर्ड इज जो ABCD ऑप्शंस है, इनमें से कहीं ना कहीं पे कोई एरर है. यू हैव टू फाइंड ऑफ दैट एरर. अगेन, ईच ऑफ दीज विमेन विशेज दैट they had read the instructions. We have indefinite pronoun each. It refers to what? One. Each of these wishes. These women. So now we are talking about one out of many. Each of these women wishes. It's correct. Lekin when we have one woman, here it will be she had read the instructions. It should be singular, not plural. ईच ऑफ दीज वेमेन. तो जो आपने यहाँ वेमेन को देख के कन्फ्यूज नहीं होना. वेमेन को देख के आप इसको इनकरेक्ट कर सकते हैं कि दिस इज हियर लाइज द एरर. वेमेन है तो विशेष नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे वेमेन नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट वन आउट ऑफ मैनी वेमेन. हमारी मुराद यहाँ पे एक वुमन है. व्हेन वी टॉक अबाउट वन वुमन, हियर इट शुड बी, दिस इज करेक्ट, वन वुमन, शी विशेज दैट शी हैड रेड द इंस्ट्रक्शन. हियर लाइज द एरर. It shouldn't be they, it should be she. यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करेगा. अगर आप विमेन की तरफ जाएंगे तो here it should be wish. ज़ाहिर है प्लूरल नाउन है, विश होना चाहिए.
लेकिन नो, दिस इज़ नॉट द केस. ये ठीक है, ये गलत है. राइट, दिस इज इनकरेक्ट. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट, नंबर 9. I am much happy today. I think it's quite simple. Here, the word much, this is an adjective of comparison. When you have to compare the two, then you use much. He is much or more intelligent, much hot than much happy. But here, you can't say much happy. Here you need intensifier. There is no comparison. दो का comparison नहीं हो रहा. We are just putting some intensity. So we have discussed that the word very, that is intensifier. Here the right option should be, the right word should be, I am very happy, not much happy. Much is used when we are to compare two nouns. जब हमने दो को compare करना होता है, जब हम उस वक्त हम much use करते हैं. Other, he is more intelligent than you. This is much hot than the other one. Whatever the word is. So here you need intensifier, that is very. The right option is option B. Number 10. They invited you and he to the party. They invited you and he to the party. They, you, he and party. Look at the sentence. Here the error is that of pronoun. They invited you. They, subject, invited, verb, and there should be objective case of pronoun. This is correct. You, objective case of pronoun. But here this is subjective case again. जैसे you का objective case है, ऐसे यहाँ भी objective case होना चाहिए. They invited you and him to the party, not he. The right option is option C. यहाँ पे क्या होना चाहिए? Him. Because we need objective case of pronoun. We have discussed the cases of pronoun. Subjective case, objective case, possessive case. तो यहाँ पे हमें कौन से केस चाहिए pronoun का? Objective case. They invited whom? Him. You and him. जैसे you objective case है, subjective भी you होता है. जहाँ पे आपको ये confuse कर रहा है, लेकिन ये objective subjective you के दोनों सेम होते हैं. लेकिन this is not the case in case of he का ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास मौजूद है him. So here the right option is option C. Number 11. He is more stronger than his brother. He is more stronger than his brother. Again there is the error of adjective. We have discussed the degrees of adjective. He is more stronger. It should be he is stronger than it. We have already used the comparative degree of strong. हम साथ more नहीं लगाएंगे. More हमने डिस्कस किया इन डिटेल के साथ एडजेक्टिव की कंपेरिजन डिग्रीज में. When we want to compare the two, we use comparative degree. तो बाद ऐसे जो ER के साथ comparative degrees बन जाती हैं, कुछ वर्ड के साथ ER नहीं लगता तो हम more लगाते हैं. More भी और ER दोनों साथ नहीं होंगे. He is more intelligent than you. He is intelligenter यहाँ पे नहीं है. He is more beautiful than you. He is more handsome than you. He is more competent than you. Like, there are certain words that take ER to make its comparative degrees. Here it should be he is stronger than his brother. More is an extra word. So here lies the error. The right option over here is more. Here lies the error. ये नहीं होना चाहिए. Number 12. Pakistani apples are sweeter than India. Pakistani apples are sweeter than India. Apples are sweeter in India. There are 4 options. Again, there is an error of adjective. Pakistani, we have discussed that this is proper adjective. When we make an adjective with proper noun, Pakistan से Pakistani. So same should be the case here, India. यहाँ पे भी proper adjective use करने. Pakistani apples are sweeter than Indian, not India. India is a proper noun. तो हमने यहाँ पे जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी है, इंडिया से इंडियन एप्पल्स. तो पाकिस्तानी एप्पल्स और स्वीटर देन इंडियन नॉट इंडिया. तो हियर लाइज द एरर. दिस इज रॉन्ग. दिस शुड बी इंडियन नॉट इंडिया. जैसे पाकिस्तानी है ऐसे यहाँ पे इंडियन होना चाहिए. राइट. नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस.
Next is number 13. Choose the correct sentence. This is another type of question. You will be given 4 different sentences and you will be asked to choose the correct one. Again, it is based on the total grammar, tenses, parts of speech, and all the subject verb agreement. So on the basis of all these different aspects of grammar, you have to find out the correct sentence. Sentence is number 1. He is one of the employees who work overtime regular. He is one of the employees who work overtime regularly. He is one of the employee who work overtime regularly. He is one of the employee who works overtime regularly. Now this is something a bit confusing. You have to read the sentences carefully. You have to take your time. अपना time लें. Think about each and everything. कहाँ पे गलती है, किस sentence में क्या. For example, the first one, he is one of the employees who work overtime regular. पहली बात तो ये कि यहाँ पे regular adjective है, it should be adverb. ये तो हो नहीं सकता. Simple. इसको तो आप पहले ही क्रॉस कर लें. This cannot be correct. बाकी बातें बाद में. अब आपको कंफ्यूज करेगा कौन सा वाला. He is one of the employees who work overtime regularly. This one, he is one of the employee. ये तो आपको माइंड में रखना चाहिए. This is incorrect. एक और चीज़, he is one of the employees. इसे दोनों में. Whenever we talk about one out of many, he is one of the students. He is one of my best friends. बहुत सारों में से एक. ये भी आमतौर पे कॉमन मिस्टेक है. He is one of my good friend. No. He is one of my one out of many. तो आगे आप प्लूरल नाउन लगाएं. He is one of my the best friends. He is one of my class fellows. One of के बाद हमेशा प्लूरल लगेगा. ये भी नहीं हो सकता. He is one of the employees who works overtime regularly. ये आपको कंफ्यूज कर सकता है. इसके साथ भी अगर S होता, he is one of the employees who works, S डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल, who works overtime regularly. तो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको B और D. जब हम कहते हैं he is one of the employee, तो here we have relative pronoun who refer to, ये आपने डिसाइड करना है. This relative pronoun normally relate the action back to the noun. हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े. रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, तो क्लासेस को आपस में कनेक्ट करता है. ही हु रिलेटिव प्रोनाउन ईदर इट्स रेफरिंग टूवर्ड्स एम्प्लॉइज और इट्स रेफरिंग टूवर्ड्स ही. ये आपने डिसाइड करना है, ये आपने डिटर्मिन करना है. तो हियर दिस रिलेटिव प्रोनाउन रेफर टूवर्ड्स एम्प्लॉइज. ही इज़ वन ऑफ द एम्प्लॉइज़. ये उन एम्प्लॉइज़ में से जो रेगुलरली काम करते हैं. हम बात ही की नहीं कर रहे, हम बात एम्प्लॉइज़ की कर रहे हैं. इट मीन्स दैट वी हैव प्लूरल नाउन. ही इज़ वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ हु वर्क ओवर टाइम रेगुलरली. दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस. ही तो करेक्ट हो नहीं सकता, बात ही ख़त्म. इन ऑप्शन में देखा जाए, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे. अगर यहाँ पे एम्प्लॉइज़ होता तो यहाँ पे ये रेफर हु वर्क्स का मतलब है यहाँ पे रेफर कर रहा है ही की तरफ. He is one of the employees who works overtime regularly. This is not correct because here who is referring towards employees, not towards he. Right? The right option is option B. He is one of the employees. ये उन employees में से who work overtime regularly. Who works होगा तो फिर it means that we are referring towards he, the subject. No. Next. This spectacle is very costly. This spectacle is very costly. These spectacles are very costly. These spectacles are very costly. These spectacles are very costly. I think it's very simple. Spectacles is a plural noun. ये इसको हम spectacles कहते हैं. तो these spectacles are very costly. This is the right option. This is correct sentence. Option B. These spectacles are very costly. Spectacle का मतलब होता है व्यू, नज़ारा, जब सिंगुलर होता है. और स्पेक्टिकल ग्लासेस को कहते हैं. ग्लासेस भी होगा फिर भी these glasses are. तो ये हमेशा प्लूरली तौर पे यूज़ होता है. जैसे people are. people का सिंगुलर कोई नहीं है. तो spectacles it's a plural noun. It will always take, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से it will always take plural verb. These spectacles are very costly. Number next.
15. Students feel relaxed after giving exams. Students feel relaxed after here it is taking. Students feel relaxed after giving exam. Students feel relaxed after taking exam. After giving exam, students feel relaxed. Students feel relaxed after they took exam. Here, just one thing that you must keep in your mind for exam. When you appear in exam, the word is take. एग्ज़ाम देने के लिए, यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, एग्ज़ाम देने के लिए टैग इस्तेमाल होते हैं, एग्ज़ाम लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए गिव. द टीचर हैज़ गिवन अ टेस्ट टू स्टूडेंट्स. द स्टूडेंट्स आर टेकिंग द टेस्ट. तो टेस्ट देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए टैग का लफ्ज़ यूज़ होता है. तो ये द राइट ऑप्शन इज स्टूडेंट फील रिलैक्स्ड आफ्टर टेकिंग एग्ज़ाम. ऑप्शन बी, दिस इज करेक्ट सेंटेंस. Right, we have discussed 15 and we are left with 3 more. Number next is we respect him as our elder brother or we respect him as our older brother. बाकी दो ऑप्शन बिल्कुल ही फजूल से थे, इसलिए मैंने दो ही लिखे. तो whenever you talk about there are two, elder and older, what is the difference between these two? जब हम उम्र में बड़े की बात करते हैं, ही इज़ एल्डर देन वी इन कंपेरिजन टू अनदर पर्सन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ही इज़ एल्डर देन, तो वी यूज़ द वर्ड एल्डर नॉट ओल्डर. ओल्डर कहते हैं इन एज, बूढ़े के लिए. राइट, इट्स वेरी सिंपल. वी रिस्पेक्ट हिम एज अवर एल्डर ब्रदर. बूढ़ा भाई नहीं, बड़ा भाई. उर्दू में कहते हैं बड़ा भाई और बूढ़ा भाई. आप किसी का बूढ़ा भाई कहेंगे कि बड़ा भाई कहेंगे, तो बड़ा भाई इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ एल्डर. इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट, द मैटर इज़ बिटवीन ही एंड मी और द मैटर इज़ बिटवीन ही एंड आई और द मैटर इज़ बिटवीन हिम एंड माइन. अगेन देयर इज cases of pronoun. The matter is between. So here we need two subjects. I have discussed cases of pronoun in detail. When we need objective case, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था, वहाँ पे ही की जगह पे हिम होना चाहिए, मी होना चाहिए, अस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केसेस है. बट यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए बोथ. इट शुड बी द मैटर इज़ बिटवीन आई, ही एंड आई, नॉट ही एंड मी. यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस. नो. तो इट इज़ द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. द मैटर इज़ बिटवीन ही एंड आई, उसके और मेरे दरमियान. ही एंड आई, नॉट ही एंड मी. मतलब ऑब्जेक्टिव केस नहीं है. अगेन वी नीड बोथ द सब्जेक्टिव केसेस. तो ही भी सब्जेक्टिव केस है, आई भी सब्जेक्टिव केस है. तो राइट ऑप्शन इज ही एंड आई. द लास्ट MCQ ऑफ द डे. We should not hate poors. We should not hate the poors. We should not hate the poor. We should not hate poor. Again, we have discussed adjective in detail. We have discussed one kind of adjective. Sometimes we use the to make plural adjective. आप कह सकते हैं कि proper noun. तो adjective को जब हम proper करते हैं, उसके साथ हम दा लगा देते हैं, उसके साथ s नहीं लगता. जैसे हम noun में s लगा के plural बनाते हैं. So here when we add the definite article with such kind of noun, it becomes plural. It represents the whole class. The poor, the rich, the wealthy, the healthy people, the ill. It means we are talking about all the poor, all the wealthy, all the rich. We just add the with this adjective. It becomes the poor, the intelligent, the डेफ, द ब्लाइंड. तो द लगाने से फिर आगे आप एस नहीं लगाएंगे. द मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल. वी टॉक अबाउट ऑल द ब्लाइंड पीपल, ऑल द डेफ पीपल, ऑल द पुअर पीपल. हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. वी शुड नॉट हेड द पुअर. पुअर्स नहीं होगा. राइट. दीज वर 18 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs based on subject, verb, agreement, parts of speech, tenses. So you have to keep in mind all the grammar, all the grammatical rules based on tenses, sense of concept of tenses, parts of speech, their concept, subject, verb, agreement,
and in next video I will discuss some more MCQs based on different aspects of English grammar. I hope now your concept about the thing that we have discussed is totally clear. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.